solve by variation of parameters in using Raskin. This is a second order differential equation. From this equation, homogeneous equation is d square minus 2d plus 1 is equal to, plus 1 into y is equal to 0. From this equation, auxiliary equation will be d square minus 2d plus 1 is equal to 0. Now we can write this equation as this one. Solving, we get d is equal to 1 1. So yc will be equal to c1 plus c2x e power 1x. Here we have repeated roots, so the complementary function will be equal to c1 plus c2x e power 1x. Now we can write this equation as c1 e power x plus c2 e power x e power x. This is u, this is v. Value of u is e power x, value of v is x e power x. Now this is complementary function. From here we will start variation of parameters. So replace c1 and c2 by a and b, where a and b are function of x. This is yp. This e power x is here. For a we know the formula. Similarly for b we know the formula. X e power x is v, which is here. Now this w means Raskin. So this is, here is u, here is v. This is u, this is v. This is u dash, this is v dash. This is cross multiplying. Before cross multiplying, putting value of u and v. This u e power x is here. This is v, which is here. Derivative of e power x is here. Derivative of this. Here we have product rule. Here we have product, and we have to find the derivative by product rule. So this is the value. Now cross multiplying. This is the simplification. E power x into x e power x is equal to x e power 2x, adding exponent. Similarly, e power x into e power x is equal to e power 2x, adding the exponent. Here e power x into e power is equal to e power x plus x, which is x e power 2x. Now cancelling the like terms, the first and the last term will be cancelled, and value of Raskin is e power 2x, which is not equal to 0. Now we have to put further values. This is yp, which is here. This is e power x, which is here. This is minus sign, which is here. This v, this is v. This function is v. हमने यहाँ पे लिखा है. This is v. So putting the value, this v is this one. This is v. This is v. So here we have value of v. This is r is equal to e power x. This is the this is the function lying at right hand side of the given differential equation. This w is value of Raskin, e power 2x. This w is equal to e power 2x, which is here. So this is e power x here. V, value of v x e power x, value of r is e power x, value of w is e power 2x. Now similarly, this x e power x is here, u. This is u. This is u. This one is u, and here we have u. This is u, and here we have u. This is r, this is w. Now here we have to simplification. Here we have simplification. E power x into e power x, e power 2x, e power 2x. This is e power 2x. These two will be cancelled. Similarly, e power x into e power x will be e power 2x, and e power 2x will be cancelled with this denominator. Here we have integral x dx, which is x square divided by 2, and this minus sign is here. Now here we have integral dx. Integral dx is equal to x. X e power x is here. Now simplifying, so this is the simplification, and finally we get yp is equal to x square e power x divided by 2. Now we know that y is equal to yc plus yp, c1 e power x plus c2 x e power x. This is the yc, and this one, this is the yp, which have been put here. This is yp. Y is equal to yc plus yp, so these two are yc, and the last one is yp.
So this is the solution of the second order differential equation. Working rule for a third order differential equation. This is a third order differential equation. This P, this Q, this R, these are constant, and this S is a function of X are constant. The complementary function for this equation is yc is equal to c1 into u plus c2 into v plus c3 into omega. Since it is a third order differential equation, so the roots of auxiliary equation will be 3, and this yc will be the complementary function of the homogeneous equation corresponding to this equation. Now from here we have to start variation of parameters, replace c1, c2, c3 by 3 functions of x. The first function is a, second is b, third is c. This a, b, c are function of x, and this u which is here, v is here, this omega is again here. Now we have to find value of a, value of b, value of c. This value of a is derivative of a with respect to x. To find value of a, we have to use this formula. To find value of b, we have to use this formula. Similarly, to find c, we have to use this formula. So here we will take s over w, here we will take minus s over w, here we will take s over w, plus minus plus. To find value of a, इसी a की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इसी u को नहीं लेना है, इसी v को और ओमेगा को यहाँ पे लेना है, और इसी v का डेरिवेटिव लेना है, इसी ओमेगा का डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह b की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इसी v को नहीं लेना है, इसी u को और इसी ओमेगा को यहाँ पे लेना है, और इसके डेरिवेटिव है। इसी तरह इसी c की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इसी ओमेगा को नहीं लेना है, हमने इसी u को और इसी v को यहाँ पे लिखना है। This here, this w is Raskin, and this Raskin is a determinant of u, v, omega. This is u, this is v, this is omega. So u, v, omega, here we will have as derivative, here we will have as second order derivative. Value of this determinant should be not equal to 0, because this is it lies in the denominator, and to find value of this equation, this denominator should not be equal to 0, but it should be non-zero. We can find a, b, and c as follows. From these three equations we can find value of a and b, taking integral of both sides. So value of a will be equal to integral this determinant into s over w dx. Now to find value of b, we have to take integral. So this b will be equal to here minus integral this denominator, this determinant will be here, s over w will be here dx. Similarly, to find c, we have to integrate. This c will be here, integral of other side, right side. So this determinant will be here, s over w will be here. It is a non-homogeneous differential equation. This one, this is the auxiliary equation. This is the auxiliary equation. Now we have to solve this equation by guessing. We have to guess the roots of this equation. We will find the first root by guessing. Obviously d is equal to 1 is the root of 2. If we put value of d equal to 1 here, this 1 will satisfy this equation. So d is equal to 1 is one of its root. Now by synthetic division, जब किसी इक्वेशन का वन रूट मालूम हो जाए तो फिर हम साइंथेटिक डिवीजन से अदर रूट्स मालूम कर सकते हैं। इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होता है, लिहाजा डी इक्वल टू 1 इसका रूट है। अब इसी रूट को हमने यहाँ पे लिखा, here from here the coefficient is 1 which is here, from here coefficient is -6 which is here, here is coefficient 11, here is -6 the constant here.
इसी फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू राइट 1 minus x 11 minus x here, this 1 is here, इसी 1 को नीचे ले आना है, 1 into 1 is equal to 1, इसका सिम्प्लीफिकेशन -5 है, -5 into 1 is equal to -5, इसका सिम्प्लीफिकेशन है 6 into 1 is equal to 6, यहाँ पे जब 0, whenever we get 0 here, then it mean that this one is a root of the given cubic equation. जब कभी साइंथेटिक डिवीजन में यहाँ पे 0 आ जाए तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो इसकी इक्वेशन का रूट होगा. whenever here we get 0, then the number lying here will be the root of the given equation. तो चूँकि यहाँ पे 0 है लिहाजा ये 1 रूट है, और इसी 1 d is equal to 1, इसी d is equal to 1 को हम d-1 जब लिखेंगे तो ये फैक्टर आ गया. ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है. इसी इक्वेशन का 1 रूट क्या है, d-1, जो यहाँ पे लिखा गया है. अब यहाँ पे इसी 1 का मतलब है 1d², इसी -5 का मतलब है -5d, इसी 6 का मतलब है 6. अब इसी को जब हम फैक्टराइज करते तो ये आता है. नाउ बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, तो इन तीनों फैक्टर से हमें d की वैल्यू 1 2 3 आता है, और यहाँ से हम yc लिख सकते हैं c1 e⁻1x + c2 e⁻2x + c3 e⁻3x. अब वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को हमने यूज़ करना है. इसी c1 c2 c3 की जगह हमने a b c लिखना है, और ये यहाँ जो फंक्शन है u है, यहाँ जो फंक्शन है ये v है, यहाँ जो फंक्शन है वो ओमेगा है. अभी हमने यहाँ पे a b c जो लिखा ये क्या है, d3r फंक्शन ऑफ x. अब हमने w की वैल्यू मालूम करना है. w का मतलब है रास्किन, तो हमने w की वैल्यू मालूम करने के इसी u इसी v इसी w को यहाँ पे लिखना है. फिर यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा. पुटिंग द वैल्यू, तो ये u v w हमने पुट किए. यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गए, यहाँ पे इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गए. फर्स्ट कॉलम से हमने e⁻x का मन निकाला, सेकंड कॉलम से हमने e⁻2x का मन निकाला, थर्ड कॉलम से हमने e⁻3x का मन निकाला. अब यहाँ पे है e, तो इसी e की जो x है 2x है 3x हो, इसको एडिंग द एक्सपोनेंट, तो ये हमें मिलेगा e⁻6x आ गया. अब यहाँ पे डिटरमिनेंट है, एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट बाय फर्स्ट रो, तो ये इसका एक्सपेंशन है. और यहाँ पे जो सिम्प्लीफिकेशन है इससे ये आता है 6 और -6 कैंसिल होगा, तो हमारे पास 2e⁻6x आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है. वैल्यू ऑफ रास्किन इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब हमने मालूम करना है dA/dx, तो dA/dx मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे लिखना है s/w, और यहाँ पे u नहीं लिखना है बल्कि यहाँ पे vw लिखना है, और यहाँ पे इसके डेरिवेटिव है. s क्या है, s गिवन क्वेश्चन में राइट साइड है. गिवन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दिस इज़ द गिवन क्वेश्चन e⁻2x, दिस इज़ s, ये p है, ये q है, ये r है, और ये s है, दिस इज़ s. तो यहाँ पे हमने लिखा s की वैल्यू क्या है, e⁻2x है, ये क्वेश्चन में राइट साइड है. और ये जो w है, यहाँ पे जो w है ये रास्किन की वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ w. हमने यहाँ पे पुट किया. ये v की वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है, यहाँ पे इसके डेरिवेटिव है. क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं तो e के जो पावर है एक्सपोनेंट वो ऐड होंगे, 2x + 3x 5x आ गया. इस तरह ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो e की जो 2x है और 3 से ये e⁻5x बनेगा. 3 से जब 2 हम माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे 1 आता है. अब यहाँ पे e⁻2x है, e⁻5x है, तो ये e⁻7x आएगा, और ये डिनोमिनेटर यहाँ पे. अब e⁻7x और नीचे e⁻6x है, तो ये e⁻x बनेगा, और ये 2 अपने साथ में आएगा. तो dA/dx यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हमारे पास है dA/dx, और इसकी वैल्यू यही है. अब हमने a की वैल्यू मालूम करना है, तो यह भी इंटीग्रेशन लगाना है, यह भी इंटीग्रेशन लगाना है.
तो जब इसके साथ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इससे ये आएगा, और यहाँ जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 1/2 इंटीग्रल ई पावर एक्स जो कि बराबर है ई पावर एक्स बाई 2। दिस इज़ वैल्यू ऑफ ए। अब वैल्यू ऑफ बी मालूम करने के लिए हमने लेना है डी बी ओवर डी एक्स। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, एस और डब्ल्यू लगाएंगे। बी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने वी को नहीं लिखना है बल्कि हमने यू और ओमेगा को लिखना है, और नीचे इसके डेरिवेटिव है। एस हमारे पास क्या है, दिस एस इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रास्किन, और यू वी हमने ऊपर लिखे हैं। दिस इज़ यू, दिस इज़ ओमेगा, और नीचे इसके डेरिवेटिव है क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो ई पावर एक्स और ई पावर 3x बनेगा ई पावर 4x, और साथ में 3 आएगा। इस तरह इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा ई पावर 4x। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 से 1 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 ये आपस में कैंसिल होगा। इसी तरह हमारे पास ये 2x है, ये 6x है। ई पावर 2x और ई पावर 4x ये बनेगा ई पावर 6x, जो नीचे वाले ई पावर 6x के साथ कैंसिल होगा, तो ये -1 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव b विद रिस्पेक्ट टू x है, जिसकी वैल्यू यही है। अब यहाँ पे दोनों के साथ जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो b हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ -1 dx, और इंटीग्रल ऑफ -1 dx बराबर है माइनस इंटीग्रल dx बराबर है -x। सो दिस इज़ वैल्यू ऑफ b। अब हमने c की वैल्यू मालूम करना है। c की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने फार्मूला लगाया है s ओवर w। c की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने ओमेगा को नहीं लिखना है, हमने u और v को लिखना है। नीचे इसके डेरिवेटिव है। s इज़ द राइट हैंड साइड फंक्शन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस ओमेगा इज़ वैल्यू ऑफ रास्किन, और u v की वैल्यू और नीचे इसकी डेरिवेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन है, ई पावर 2x और ई पावर 3x बनेगा ई पावर 5x, और नीचे ई पावर 6x है, तो इसका सिम्प्लिफिकेशन है 1/2 ई पावर x, और इसी ई पावर x को हम ऊपर जब ले जाएंगे तो ये ई पावर -x बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x है, जिसकी वैल्यू हमारे पास ही है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे c की वैल्यू आएगा, और यहाँ पे -1/2 ई पावर -x आएगा। यहाँ पे जो माइनस है, ये ई पावर -x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हमें मिलेगा। तो इसी प्रॉब्लम में हमने सारे वैल्यूज़ मालूम किए। अब अगर हम देख लें तो हमने a की वैल्यू मालूम किया, दिस इज़ a, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने a की वैल्यू मालूम किया, दिस इज़ a, और दिस इज़ b एंड दिस इज़ c। तो हमने ऊपर जो क्वेश्चन लिखा था, जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर था, यहाँ पे हमने a y p लिखा है, a e पावर x प्लस b e पावर 2x प्लस e पावर 3x। तो हमने a b और c की वैल्यू मालूम किए, तो उन सब वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिखे। दिस इज़, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ a, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, और ये हमारे पास c की वैल्यू है। तो यहाँ पे और ये e पावर x u है, और ये दूसरा वाला v है, और ये आखिर वाला ओमेगा है। अब यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन है, तो ये इसका सिम्प्लिफिकेशन ईजी है। ये हमारे पास वाई पी आ गया, y बराबर है वाई सी प्लस वाई पी। तो ये दोनों, ये तीनों, these three terms represent yc, the last term represent yp. So this equation represents the complete solution of the third order differential equation.